We have been joined by Mr. Varun Khaitan. He's the co-founder and CEO of Urban Company. So thank you so much for talking to ET Now. Today you made a very important announcement, and it's probably an industry first announcement. You have made your partners as you're giving them employee stock options to them. So could you tell us more about this in a proper elaborate manner? How will it impact the company, and what will be the benefits for your partners? Sure. Our service professionals, whom we call partners, have always been at the center of building Urban Company. Our philosophy and our vision has been to empower them to deliver great quality services like never seen before, and in the journey with us, for them also to have successful and respectable livelihoods. So, over these last 8 years, in order to achieve our vision, we have supported and worked with them on training, in providing them high quality and good earnings, in taking care of them through provisions like life accident insurance. And today, we are taking another big step forward in making them participants in the wealth creation journey of the company. And traditionally, um, there are instruments like employee stock option plans, which are meant to reward um, team members who participate in building the company since early days. We want to extend that same philosophy to our service partners as well, because their contribution in building Urban Company is as much as anybody else's, with the founders and the rest of the team. So this is a stock option program through which a set of our service partners will now become shareholders, and they will enjoy the benefits of wealth creation as part of the company building process. So initially, how many partners have you guys chosen for the particular stock options, and what is the total financial outlay for this whole exercise? So what we are declaring today is our intent to award partner stock options worth 150 crores over the next 4 to 5 years. Um, we already have approval for 75 crores from the Urban Company board, and that's the portion that we want to grant over the next 3 to 4 years. Today, we have already started that process by giving it out to 12 of our service professionals, and there'll be more through a very well defined, transparent, and meritocratic process through the coming months. So now talking about the company now, it's been quite some time since Urban Company raised some fresh investments. So for the new financial year, what are your plans to raise investments, and what kind of a new Urban Company can we expect to see in the calendar year 2022? Sure. No, we just raised our last round of capital in March, April last year. And the focus really is to use the investments raised so far to grow the company. And our focus this entire year is to expand our services to more cities, to more categories, and to provide high quality services to more and more customers. So Urban Company plays a very important role as far as the gig economy is concerned. So as far as the gig economy is concerned, we have seen two or three disruptions of COVID in the past 2 or 3 years. So going forward, do you expect any other kind of disruption coming into your business? And if there's any other kind of disruption which comes in between, how is the company going to plan to sail its way through? Um, I think the future is impossible to predict even for the most knowledgeable experts. The past 2 years have been a great learning experience for us. In the tough times of COVID as well, our business has grown multifold because we've done things to tailor our services to the needs of customers, to provide them safe, high quality services in their homes. We've also done a whole slew of initiatives to take care of our service professionals, make sure they are healthy, and make sure they are active. So a lot of new service professionals joined us in this time, and the existing service professionals on the platform actually stayed with the platform, continued to work hard, and I would say our partnership actually grew both larger and stronger. So I would say if and when there are future
macro shocks or challenges, I'm sure we'll continue to work both as a team internally and with our service partners to sail through them. So any interesting acquisitions in your mind as of now, since we have seen in the past 2 years people are depending more on tech and the tech is growing. So any interesting acquisitions in mind to in order to help Urban Company to grow further and probably strengthen its digital and electronics IT core? All the efforts we're doing is through our own teams, and there are lots of them. Building a deeper technology platform, launching new services, and making our platform both larger and better. Nothing to talk about acquisitions at this time. Thank you so much talking to ET now. Thank you, sir. Thank you. Rolling. हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर वरुण खेतान. ही इज़ अ को फाउंडर एंड CEO ऑफ अर्बन कंपनी. सर ET नाउ स्वदेश से बात करेंगे. धन्यवाद. आज आपने अपने पार्टनर्स को एक स्टॉक ऑप्शंस देने की बातचीत करी है. इसके बारे में से थोड़ा हमको बताइए और क्या इलाबोरेट प्लान क्या रहेगा इसका? श्योर. हमने कंपनी 2014 में शुरू करी थी, और तभी से हमने ये देखा था कि इस इंडस्ट्री में जो काम करने वाले मेहनती मैन एंड वुमेन हैं, हम जो हमारे सर्विस प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें कंपनी के सेंटर में रखना ज़रूरी है. हमें उनके साथ मिलकर एक बेहतरीन होम सर्विसेज कंपनी बनानी है, और पिछले 8 सालों में इस दिशा में हमने बहुत सारा काम किया है. हमने कंपनीज़ के साथ ना पार्टनर करते हुए इंडिविजुअल सर्विस प्रोफेशनल्स के साथ पार्टनर किया, उन्हें ट्रेन किया, और उन्हें तैयार किया कि वो अपना खुद का बिजनेस हमारे कंपनी के साथ स्टार्ट कर सकें. हमारे सर्विस प्रोफेशनल्स की अर्निंग्स पहले से और बाकी अपॉर्चुनिटीज़ के मुकाबले अर्बन कंपनी पे बहुत अच्छी है. ये हमारा पहला लक्ष्य था. उसके बाद उनके लिए एक सेफ्टी नेट क्रिएट करना इन द फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस, उनको तरह तरह की सर्विसेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट अवेलेबल कराना. और आज एक हम नया स्टेप ले रहे हैं, अपने सर्विस पार्टनर्स को बहुत अहम भागीदार बनाने के लिए. उन्हें हम उनके लिए एक पार्टनर स्टॉक ऑप्शन प्लान स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके तहत चुनिंदा सर्विस प्रोफेशनल्स अब अर्बन कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे. और इसका एक बहुत ही सिंपल मकसद है. जैसे हम साथ मिलकर एक बड़ी कंपनी बनाएं, तो उसका वैल्यू या उसमें जो एक वेल्थ क्रिएट होगी वो हमारे सर्विस पार्टनर्स भी एंजॉय करें. सर इनिशियली कितने पार्टनर्स को आपने चूज़ करा है ये स्टॉक ऑप्शंस देने के लिए, और फाइनेंशियल आउटले कितना रहेगा इसका, और आने वाले टाइम पे कितना हम इस पार्टनर स्टॉक ऑप्शंस को बढ़ता हुआ देखेंगे? तो हमारा कमिटमेंट है अगले कुछ सालों में हम 150 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक ऑप्शंस हमारे पार्टनर्स को ग्रांट करेंगे. एंड उम्मीद है कि कंपनी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इनकी वैल्यू कई गुना इंक्रीज़ होगी. तो आज हमने अनाउंस किया है, आज हमने चुनिंदा 12 पार्टनर्स को स्टॉक ऑप्शंस दिए हैं, और अगले कुछ महीनों और सालों में ये इंटायर ग्रांट बहुत ही ट्रांसपेरेंट और मेरिटोक्रेटिक तरीके से हमारे सबसे मेहनती और कंट्रीब्यूटिंग सर्विस पार्टनर्स को दिया जाएगा. तो वेरी लास्टली नया फाइनेंशियल ईयर के क्या टारगेट्स रहेंगे कंपनी के लिए, और जहाँ तक एक्सपेंशन प्लान्स की बात आती है और फंड रेजिंग प्लान्स की बात आती है, क्या आपका प्लान रहेगा इस साल के लिए? हाँ, हमारी हर साल की तरह इस साल भी कोशिश है कि हम तेज़ी से कंपनी को आगे बढ़ाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को सर्विसेज दे पाएँ. इसके लिए हम नए सिटीज़ में जा रहे हैं और एग्जिस्टिंग सिटीज़ में और नए सर्विसेज में जा रहे हैं. ऑफ कोर्स इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए कई सारे सर्विस प्रोफेशनल्स को भी इस साल कंपनी के साथ जोड़ा जाएगा, और इसी में हम सब लगे हुए हैं. No real plans to share at this point. We're all hard at work कंपनी को बिल्ड करने के लिए और ग्रो करने के लिए. Thank you so much.